welcome to Next IS English Species and News, where we cover all the important species that were there in the week. So let us quickly get started. The first species in news is Diplocentrum papillosum. Alright, so what is this Diplocentrum papillosum? Let us understand. It is a new orchid species named Diplocentrum papillosum. Has been discovered in Kanthalur, Marayur in Idukki district of Kerala. Idukki district Kerala के ये नया ऑर्किड का स्पीशीज मिला है. It has been discovered और इसका नाम है Diplocentrum papillosum. Alright. ये belong करता है कौन से जीनस को? Diplocentrum जीनस को. That is why you can see the name. Okay. It is an endemic plant found in the southern mountain ranges of the Western Ghats. ये एक एंडेमिक प्लांट है जो मिलता है वेस्टर्न घाट्स के सदर्न माउंटेन रेंजेस में. ये प्लांट ग्रो करता है रॉक्स और ट्रीज ब्रांचेस में. ओके इसका द नेम ओरिजिन इज द टर्म पैपिलोसम रेफर्स टू पैपिलोस व्हिच इज अ स्मॉल निपल लाइक टेक्सचर ऑफ द फ्लावर. सो ये जो छोटा सा टेक्सचर है फ्लावर का, इससे इसका नेम ओरिजिनेट होता है. फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, फ्लावर जो होता है पिंक और वाइट, पेटल्स डिस्टिंक्टिवली शेप्ड पेटल्स इसके होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड स्पीशीज. The second species in news is the rusty spotted cat. You can see here the rusty spotted cat. You can see the pictures of rusty spotted cat here. And a rare rusty spotted cat was recently sighted in Shergarh forest of Baran district, Rajasthan. राजस्थान के बरन डिस्ट्रिक्ट में के शेरगढ़ फॉरेस्ट में ये रेयर रस्टी स्पॉटेड कैट दिखी है. और कितनी सुंदर सी, कितनी क्यूट सी है. यू कैन सी हियर, बट इट इज एक्चुअली नॉट वेरी क्यूट. इट इज अ स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट नोन वाइल्ड कैट स्पीशीज इन द वर्ल्ड. सो ये इट इज नॉट अ पेट cat, it is a wild cat species which is smallest and lightest. Its scientific name is Prionilurus rubiginosus. तो ये इसका साइंटिफिक नेम है. अब इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये नेपाल, श्रीलंका और इंडिया में मिलती है. इंडिया में Northern and Central India, Western Ghats, Kutch, Rajasthan and dry deciduous and semi-deciduous forests of peninsular India. Okay, and about 80% of the global population is found in India. So 80% की जो पूरी दुनिया की आबादी है वो इंडिया में मिलती है. इसकी physical features हैं इसका that the weight is less than 1.5 kgs, the length is 20 to 29 inches, about half the size of the domestic cat. जितनी आपकी normal cats होती हैं उसकी आधे size की ये होती है. Now the behavior is they are small but fierce predator. छोटी होती हैं लेकिन fierce predator होती हैं. Nocturnal हैं, active रात में active होती हैं और इनका conservation status IUCN Red List में near threatened है. Alright, moving forward, let us talk about the Indo-Pacific leopard shark. So let us understand what is the latest news on this. Thailand's first marine rewilding with release of an Indo-Pacific leopard shark near Mai Thon Island. ठीक है, also called the zebra shark. This shark is also called the zebra shark. The pattern is stripped juvenile spotted adult. So when this is a small shark, तो इसमें strips होती हैं, जैसे जैसे बड़ी होती है ये strips इसकी spots में convert हो जाती हैं. Okay, the type is slow swimming reef shark. तो ये बड़ी slow swim करती है और reef shark है. Habitat है इसका tropical Indo-Pacific coastal and reef waters. And reproduction is oviparous, which is egg laying sort of reproduction, and then diet is molluscs, crustaceans, small fishes. इसका लाइफ स्पैन होता है 18 to 24 years and the threats are overfishing and habitat loss. The IUCN status is endangered. Alright, moving forward. Let's talk about Hoya nagaensis. So what is this Hoya nagaensis? ये एक नया plant species है जो discover किया गया है नागालैंड में. You can see the picture of this here. And this is its location is Kavunho Community Reserve Forest in Phek, and the habitat is high altitude temperature forest. Then it comes from a family of Apocynaceae, which is wax and milkweed, and genus is Hoya. So you can see the name where it is coming from. Then the features are it is star shaped, it has star shaped waxy flowers. तो star shaped के waxy flowers होते हैं, milk like latex होता है और climbing trailing habit होती है. Alright, then conservation known from one location, highly vulnerable. It is highly vulnerable, and extras are Hoya's native to Southeast Asia, Australia, Polynesia. Alright.
So this was the last species for today, and we have already discussed all the important species that were in news this week. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.